Isuzu D-Max 4x4. We have this one for last 30 minutes and এই গাড়ি এମିତି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଟି ହେଇକି ଯିବ ମାଟି ବାଟି ଉଡ଼େଇକି ଫଟେଇକି ରାସ୍ତା ଯିବ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଦରକାର. Don't get any of your small cars. 300 ମିଟର ପରେ ଲେଫ୍ଟ. Right, we're in SIMLIPAL now. So Muna bhai busy over there taking the pictures of his son. And सबसे बेकार वाला चीज़ ये हुआ, I've actually forgot to bring my drone. तो ड्रोन तो आ गया पर मैं प्रॉप्स लाना भूल गया. वो प्रॉप्स मैं नया घर में चार्ज करा था बैटरीज, वहाँ शायद प्रॉप्स भूल गया. मे बी नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक दोस्त के साथ, then we'll have a lot of flights. But the weather, we are not going to get this weather again because the weather is crazy today. I almost had a lot of flights with Shailen's Mavic. I'm gonna show you all those footage from his Mavic, but they're shot at 1080p. Normally I always shoot at 4K. So anyways, maybe we'll have to come again and do a lot of batteries and shoot 4K. But this place is like crazy. This is heaven. But there is no network. एक भी गोट्टे भी बाड़ी नहीं, जम्मा network नहीं, internet nothing. There is no sign of network, phone network, internet, nothing. And roads are pretty bad, pretty bad. If you are taking a small car, please don't come. Get a big car. You must have seen the roads in my last 360 videos. In this video, they're pretty. Very bad, and not sure why they're not doing the roads. When I asked those hotel guys, road banano hotel, though it is resort, it is, they're saying forest department wala asile banega. He almost would have lost his drone as well. दीटा बाड़ी एपट सेपट लगी रेड जोड़ी व्हाइट लगे था, ब्लैक लगे, ब्लैक जो लगे था, व्हाइट लगी आज जाई था ना ड्रोन टा. But yeah, it's saved. So basically his drone has got a problem today. I have actually forgot my props today, and Salen was the only guy who was carrying his drone. So I fortunately was able to use his drone and have my card in that. To have footage of 1080p, you need to see all those footage.
This is maybe the first time for me in India for any of the national parks actually. I've been to a lot of national parks in the US, but India is my first time and roads are so bad, so crazy bad. अगर कार ला रहे हो तो एक बड़ा वाला कार लेके आना, इनोवा, फॉर्चूनर, पजेरो, ये सब कार ही चलेगा. आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग टू गेट माई Z4. शायद ये गाड़ी लौटता ही नहीं. अगर मैं कार लेके आता गाड़ी 4-5 पीस में लौटता घर. वेरी बैड रोड्स. यू नीड टू सी ऑल दोस फुटेज ऑफ द रोड्स फ्रॉम माई इंस्टा 360. एंड सिमलीपाल इज एक्चुअली ह्यूज, बहुत बड़ा है. 200 किलोमीटर शायद इसका मतलब पूरा रेडियस है एंड रोड्स है ही नहीं. अब हम जहाँ हैं यहाँ तक तो रोड बहुत ही ख़राब था. मे बी हम लोग 20-30 किलोमीटर अंदर है अभी. इसके बाद कोर एरिया यहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद तो अलाउ ही नहीं, नो एंट्री जोन है. यहाँ से फिर 160 किलोमीटर्स एंड बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बहुत सारे. Almost many of the waterfalls are maybe unexplored, but yeah, we must have seen a very little, maybe less number of videos on the internet as well, but those thing needs balls. This thing needs balls. You need to see this core area, no entry zone. It says core area, no entry. ବାଡ଼ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇପାରିବନି, no entry. So it's basically a BSc social event. So we are like maybe 20 BSc members and like 12 or 13 big cars, all the big cars. So our plan was, मतलब मैं क्या किया, मैं Z4 लेके भुवनेश्वर से पानी को लिया है. वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे हमने Z4 पार्क करके वहाँ से उसको मर्सिडीज GL पे हम आए. So thank God I did not get my car because the roads are so bad. It's surely an experience. अभी हम यहाँ रुके हुए हैं लुलुंग रिजॉर्ट. इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा, बट दिस इज a nice resort, huge and just inside the wild, just inside the jungle. बहुत ही ख़राब रोड दे के ये रिजॉर्ट आता है, बट एक बार आप पहुँच जाओगे लगेगा कि हाँ क्या ज़बरदस्त है. बट हियर यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट, फ़ोन लाइन्स कुछ भी नहीं है. घर से पूरा कट ऑफ है. सो आज तो मतलब अभी हमें प्लान ये था कि आज सुबह 6 बजे हम आ रहे थे, फिर आ तो गए, फिर कल रात 12 बजे पहुंचना है, क्लोज टू. तो मैं तो इतना देर बिना इंटरनेट और मेरा फ़ोन किसी में रह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं फिर पेंडिंग. सो वी आर गोइंग टू लीव अर्ली मॉर्निंग बाय लाइक 6 or 7 AM फ्रॉम हियर. सो विल बी रीचिंग बाय मे बी 12 PM टू होम, क्योंकि बहुत सारा काम फिर पेंडिंग हो जाएगा. बट एनीवेज दिस इज़ एन एक्सपीरियंस. एंड अभी ये रात में ये जंगल में देखना था. अभी हम लोग एक वाटरफॉल के पास गए थे, वहाँ एक आंटी मिली, वो बोली कि भागो यहाँ से नहीं तो यहाँ फिर हाथी आ जाएंगे. तो वी हैड टू लीव अर्ली. आज जंगल रे शुआ वो साला बाघ न आसु राति रे. साला ड्रोन का ट्रेजेडी हो गया, सैड स्टोरी. एक्चुअली गॉट ऑल ऑफ माई बैटरीज, चार्जेस, ड्रोन, एवरीथिंग, बट आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ब्रिंग द प्रॉप्स. अभी ऐसा वेदर एंड ऐसा मतलब इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक डोलोमाइट्स. बट वी गोना मिस दिस. मे बी विल कम नेक्स्ट टाइम, गेट द ड्रोन एंड गेट अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स डन. एडी हाफ पैंट और हाइकिंग बुट का दरकार.
Alright, so that's it from SIMLIPAL. We are now heading back to Bhubaneswar to home, and I need to get back to work and get into my editing table. So I will see you guys later.